Okay, so typically in a sale, no, I think you are going to get a student group of 10 to 15. That is typical group in a sale, unless until obviously students do not come. Otherwise, that is the number of group in sale. And sale, they have three components. Just give me 1 second. Okay, so there are there are three stages of GD in sale, and one is group discussion, another is group task, and then third is a case study. देखो सब में practice is similar. Only thing is the response and the kind of topic they will give you will be different. The practice part is same. Practice part means जैसे आपको बोलना है, the way you have to speak, the way you have to interact with others, and couple of lines which you should practice are going to be same. See, there are two things in GD, GT, and case study. Thing number one, not to fail. That is very easy. Not to fail is very easy. Thing number two, to score high. That may take some effort. To score high may take some effort. But you know what? 40 to 50% students tend to fail. Why? Because they don't even speak anything. अभी तुम जाओगे सेल में तो तुम्हें ये दिखेगा that students are not in position to speak. कोई ऑब्जर्वर की तरफ देख रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई लड़ने लग पड़ रहा है, कोई किसी को बोलने नहीं दे रहा है. So basic tricks if you learn, that you will do if you do 5 to 6 GTs with me. Basic trick if you learn, then I'm very sure you are going to get good score also, and fail होने का कोई चांस नहीं होता. Then you will certainly pass the GD, GT and case study, and you will get good score also. Now I'm giving you couple of GD, GT case studies जो हमारा previous इसमें आया था सेल में, उसी के बेस पे मैं आपको दे रहा हूँ. Case study is nothing but he will give you a case. Study is a 1-page situation. Case study means a situation. अब डॉक्टर जो केस स्टडी हैंडल करता है वो डिफरेंट है, लॉयर जो हैंडल करता है वो डिफरेंट है, टेक्नोक्रेट्स मैनेजर्स विल हैंडल अ डिफरेंट केस. सो सेल इज गोइंग टू गिव यू द केस व्हिच मैनेजर शुड हैंडल, and they are going to check your decision making skills, managerial skills, managerial acumen. That is what they are going to check. I'm also going to give you the same case study which was given in sale last time. So similar we will do couple of case studies, we will do similar, and I'm also going to give you the best answer possible for that after we go for it. Now one page will pop up at your screen. You will read that particular page. In the meantime, you will read that and you will make up your mind what you want to speak about that, how you want to speak about that. And in the meantime, I am also going to give that particular to your WhatsApp group also, that is going to come. That particular case study is going to come to your WhatsApp group also the moment I show you here, so you can read that particular thing from there, from your mobiles if you want to read. But it will pop up at your screen also. I'll give you 5 minutes to think. Then it will start with the ordinary group discussion. Anyone will introduce, and then you will talk, you will discuss, and then at the end everybody is going to conclude. That was the format last year. Last year in many cases case study format was case study is given, 1-page document is given to you, and then 5 minutes are given to you. Then he will say, okay, start discussing now. You have to discuss it like group task, and then you will discuss, keep on discussing. He will give you sufficient time. After that he will say, okay, now one by one conclude karo. Each one will get the chance, and that is where I think he gives you the score or something like that, right? This is what I'm going to do. Any question if you have before I show you this particular case study, this particular document? Any question? Yes, sir. Yes. Sir, they have not particularly mentioned group task and GT, no, sir? That was last year also. Now last year also students के जो अपॉइंट लेटर आया था उसपे GT का ही मेंशन था last year also. Sir, Hindi I don't know. English. So last year also GD was only mentioned, but GD has 3 components. GD, oh, okay, sir. Yes. Okay, sir. Okay. That was my doubt, sir. The preparation is same, right? So just prepare for all these things. So here comes task number 2, and that is question. Yeah. Any question? Yes, sir. Sir, at the time of conclusion, how much time should we take to? Typically 2 to 3 minutes. Okay. Right. Thank you, sir. So it comes on your screen. Make sure it is visible to you. This is the case study number 2, and this is on the basis of the actual sale जो हुआ था. This is on the basis of the actual sale,
and I'm showing this particular case study on your screen. Make sure it is visible to you. Is it? Yes, sir. Yes, sir. You get Yes, 5 sir. minutes. You Yes, get 5 minutes. Please think over it, and then we will start it. Okay, okay, sir. You are not to write the case study. I have already sent it to you in your group. You are not to write it. Just read we are it. writing points. So that is also available in your WhatsApp group now.
As a page they will give you. So I'm sending Yes. you the soft copy. You will be having one page there. Okay, so I think we can start it now. Please go ahead. Yes, sir. Good evening, Good sir. evening, My name is friends. Kiran. We have been given a case study of a company which has been running in losses for the past few years, but we have a sanitizer that can be sold in large quantities, and we have a demand in the market so that we can take advantages of the situation. But we have also been given a problem that we are violating some of the norms in making this sanitization. I think we should go with the decision of selling it because it is not harming anyone, because it is not a tablet or not an injection that is a life saving. And also we need to advertise it very carefully. Like if we advertise it, it kills 99% of the germs of the in our hands or something. But it may not be killing those many germs as we didn't follow the norms. So first of all, we need to sold our existing sanitizer. Then according to our norms, we need to. I do agree with Kiran that yeah, the production should be started, but the thing should be taken care of. It should not be marketed as a medical product. Rather, it should be marketed as a non-medical product. And also, there should be urgent applications given to the authority so that in such situations the production could start and they can get their certifications done as soon as possible, because Yes. any unethical step initially would lead to the company's downfall in future. So I don't think that going with an unethical step initially would be. I think they should not. One of the most That is a important good thing in point, this but large company is but that the we should most advertise our important thing, product very see, properly. for If we are the most betraying our important thing, customers, see, if we for are the most betraying our important customers, thing, then most our important thing is product save and our but we reputation should will go discuss. down. Very less. We can take the risk But even though company is going down. Okay, so we have to take the risk. Also, if we talk about the norms, then we can follow 2-3 norms that are very important for the company, and then See, rest first, norms see, can be. Mike, Yes, we see, follow first, 2-3 norms. first the point Then is, Like, I feel that see, if first you the guys, point one is at a the time, norms. one at a time. The One at a if time, you please. if you are there If you come one by one, Please, so that one at a time. we can Mike, understand the point of everyone. see, Please, one by one, so that before everyone you get discuss something, opportunity to before speak. you discuss something, see, before we discuss something, we should go for the criticality. The if you are violating some norms, is that norm is critically affecting the things, or we have to first deal with the criticality Yes, of yes, the that's what I am norms that we saying. are violating first. Okay, For the listen. criticality, That let's see, what I am is saying. it serious? Is it any seriously any putting any adverse effect on the things when we are preparing the hand centers? That But maybe Amar, that if we you are can producing ensure. sanitizer and the authority wants that some kind of certification should be there, and you are not having such Yes, yes. certification and doing the production, then it's One more not good. thing that we can do is that we can Actually, we can make our sanitizer by using the herbal products. As we Yeah, know yeah. that the herbal products are not required. They don't require that much of testing. And according to Ayurveda, everything is good without testing. So we can use herbal. We can use Mayank, herbal. actually, we have already one made our point- sanitizer, one and point, we see, need see. to. yes, If we No, need no, no, to. no, no, yes, no. the Yeah, I want sanitizer is to. already there. I want to some point. Pharma company. Yes, Ajit. Yeah, 2 person, मैंने रोहित and प्रकाश सर both are a member जो both handle दा, but मुझे ये लगता है कि जे अगर ऑटोमेटिक लॉकडाउन आने के कारण अगर उस सैनिटाइजर का यूज मैंने
रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गया, अगर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। और जो रेगुलेटरी बोर्ड जो नॉर्म्स है वो अगर चेक के लिए बोला जा रहा है तो उसके लिए ऑटोमेटिक एक टाइम पीरियड के लिए भेज देना चाहिए, और वैसे मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट में अवेलेबल होने से अगर Yes, I am agree with you, something and I want to say that actually, we should see, not see, stop the manufacturing of the See. sanitizer, because it is Yes. not like a medicine. I don't, It's I feel consumed that in- no, we it can't should come stop. into We the can't. market We will only. not stop. And at We the will same not time, stop. Obviously, I we feel will not that it stop should come because into our the main market only concern. when of the the quality of certifications the are there in sanitizer the also. Yes. If it's not, And Yes. if it's not, then I don't feel And that it should we come need into to the find market. that First, it get the directly certification. harms the people if or I'll, not, if because it is see, used if as I'll, a if I'll, hand washing So, elements, we are right? not, Right. see, we see, are not, if we you are are not the focusing, ones who if can you are decide focusing, that. see, First, we have We are, to see, check we are for just, example, we are just how's the see, adverse effect. First of all, we have to see, check for example, sanitizer makes adverse effect on human beings or not. If this adversely affect the humans' lives, then both friends as Listen, in the my friend, I Rahul, want to add one you are thing not, that you are yeah. saying it may affect the we adversely. can't, Yeah, Listen, mind it, say it is good point. okay. I Listen, want listen. to add one point. It is a screen Friends, product. one at a time, holding please. just Friends, one at a Listen, time, please. it's a okay. Okay, I want to Yeah, say yeah, something I want to that add one point. one of my friends said that it can adversely affect the human life. Okay, Yes. so Yeah. first of all, we should remember that it is a skin product. Okay, so Yes. it will not affect that adversely. Also, at the second time, if they are using the Ayurvedic products, now, so it will surely like they are using aloe vera gel and all. Then surely it will not. I just want to see, counter when that. we talk about Not given any, sanitizer, To add they one not point. mention when we specifically talk that about, there when is we any talk about, Ayurvedic see, product. Okay, Yeah, yeah, they yeah, not Sachin. But specifically mentioned. yeah, So we yeah, cannot no, specifically. Ayurvedic is No, no, we yeah, yeah, yeah. go with the general so term the, that the we need to sanitizer bring we a are solution using. for that. Yeah, It yeah. is, it is harmful but or not अगर harmful. If it is not मुझे tested, we cannot Friends, say that it is harmful or not yeah, harmful. Okay. yeah, yeah. So friends, we friends, can अगर friends, अगर friends, friends, फार्मा कंपनी friends, one second, अगर फार्मा friends, one कंपनी second, मुझे एक पॉइंट बोलना है, अगर फार्मा कंपनी अगर नेगेटिव friends, जा रहा है, friends. ऑटोमेटिक के दोनों पर्सन है जो पार्टनर हैं जो सोचे इसको इम्प्रूव कैसे जाए, और लॉकडाउन ऑटोमेटिक हो गया है, तो एक नहीं देखिए एक पॉइंट Please, ये है please Friends, complete friends, it. friends. Listen, मेडिसिन टाइप please का complete नहीं One it. second, खा one सकते second, one हैं, ले second, सकते हैं, one second, one सैनिटाइजर को second. हैंड और I क्लॉथ think Ajit is trying to सेपरेट say डिस्टेंस something. मेंटेन Let's के hear him. टाइम भी रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। Ajit, can you One please second, say your guys. पॉइंट तो point? वो Guys, है one अजीत second, one second, one second. One second. अजीत जी के पॉइंट पे एक मैं कैलकुलेट एक Amar, चीज Amar, ऐड one करना second. चाहता हूँ अजीत जी Amar, के one पॉइंट second. पे Yeah, yeah. Amar, one second. Ajit, Guys, please this is not a complete your GD, point. so we need to share our experiences or one after one another. Yes. Where we should not contradict each other point. We should give our opinion one नो one नो by वी आर one. नॉट कंट्राडिक्टिंग Yeah, one No, by no, मैं one. एग्री कर रहा हूँ Not जी जी contradict, के but पॉइंट पे listen एग्री to कर me. रहा हूँ What We all the, agree with one the by same. one. Exactly that what the we should meaning of not the stop the specificity is that we manufacturing have and to we come should to a sell the solution. product. I We have to think come that to a we solution should here. speak one at a time, So right? Yeah, in this yeah. we One at cannot a come time. to a solution. Guys, this is not Ultimately, GD. ओके as ओके a ओके team, we have to ओके come Yeah, up with a solution. As a team, we have to Okay. come to a solution. Yes. If, Yes, if yes. okay, Yeah, yeah. Let I want everyone to give their opinion. let everyone have a point so that we can Yes. understood. Okay. Yes. Okay, Yeah, Sachin, yeah. please Matlab, Then continue. I want to Please say continue. something. Yeah, yeah. Sachin, Give me chance. Just Yeah, yeah. listen to me. Please. Okay, Yeah, yeah. Sachin, मुझे please ये continue. लगता मुझे Sachin, ये please लगता है continue. कि मुझे लगता है कि Ajit, please hold अगर on. हम दो पार्टनर हैं तो हमें ये भी कंपनी को अगर लास्ट दो ईयर नेगेटिव में जा रहा है, माइनस, Ajit, तो हमें प्रॉफिट में भी लेके जाना है और सिचुएशन को भी देखना कि अगर सिचुएशन की मांग क्या है। अगर कोविड तो हम उस टाइप का डोज नहीं दे रहे हैं जिसके कारण किसी को ह्यूमन बींग्स पे माने हार्मफुल इफेक्ट आएगा। हमें लॉकडाउन के अकॉर्डिंग उसे से कि एक फीलिंग मैंने एक लोगों को मैंने पॉजिटिविटी में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं सैनिटाइजर के थ्रू कि हमें जर्म्स और जो भी जर्म्स और ये सब होता है उससे मैंने नुकसान नहीं हो। और दूसरा चीज हमारी कंपनी 2 साल नेगेटिव में है तो हमें प्रॉफिट के लिए बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लिए अगर कोई बोर्ड पे उस बोर्ड लाइक करता है कि उस बोर्ड पे वेरीफाई के लिए तो भी हमें वेरीफाई करना चाहिए। लेकिन यह है कि हमें मार्केट में अगर रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। उसको जितना ज्यादा सप्लाई जैसे हम प्रॉफिट में, क्योंकि ऑलरेडी हम माइनस में जा चुके हैं। और दूसरी चीज ये लगता है कि टाइम ड्यूरेशन भी देखना चाहिए इसमें कि टाइम के अकॉर्डिंग, अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम बनाकर भेज रहे हैं तो टाइम और प्रोडक्टिविटी पे भी देखना चाहिए कि हम एक मार्केट में जा रहा है, दूसरी साइड से हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसका प्रोडक्टिविटी हम जो सैनिटाइजर है उसको और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट मुझे प्रोडक्टिविटी की बात नहीं है, प्रोडक्टिविटी बात की बात है। हम लोग प्रोडक्टिविटी से पहले, बनाने से पहले, प्रोडक्शन से पहले हम लोग वही डिसाइड कर रहे हैं कि अगर कोई वायलेट, अगर हम लोग सपोज
जैसे कि जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे आप बोले कि कोविड जैसे कोविड रिक्वायरमेंट है, अभी हम लोग को चाहिए जल्दी जल्दी बनाना है। तो अगर जो कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे कुछ कुछ नॉर्म्स है, देखिए अब हर नॉर्म्स को हम लोग अगर फुलफिल करके हम लोग मार्केट में छोड़ेंगे तो कुछ ज्यादा टाइम हो सकता है, मे बी कितने मंथ्स लग सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है परमिशन कि के लिए हर चीजें लग चीज सकती है। ऊपर यही से स्टार्टिंग टाइम है कि कोविड जस्ट स्टार्ट हुआ है तो हम ये नहीं समझ सकते, अगर लोग भी नहीं समझ सकते इसका रिक्वायरमेंट है। अजीत, सिद्धांत, 1 सेकंड, हैप्पी जी कुछ पॉइंट बोलना चाहते हैं? हैप्पी जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ हैप्पी जी। अकॉर्डिंग टू केस स्टडी दिया हुआ है कि कंपनी प्रॉफिट में जा चुकी है पहले से, वो सैनिटाइजर बना रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। अब है कि अब अगर उसको नॉर्म्स के लिए अगर फिर से बनाया जाए तो उसमें तब दिक्कत है कि क्योंकि कंपनी पहले प्रॉफिट में आ चुकी है, मेरी पहले लॉस में थी, कोविड आया, सैनिटाइजर बिना नॉर्म्स के बनाया, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। नहीं, अब है जैसे एक कि एक अगर अच्छा नॉर्म से देखिए, एक अच्छा एग्जांपल इस नॉर्म्स के बारे में बोलूंगा। जैसे कि देखिए हैंड सैनिटाइजर का हम लोग को पता है कि नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि एडिशन पे बोल रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग नॉर्म्स की बात करें, बेस्ट अगर मैं एग्जांपल इसी में डालना चाहूंगा तो जैसे हैंड सैनिटाइजर का मैक्सिमम कंटेंट क्या होता है? अल्कोहल कंटेंट। जो अब सपोज देख रहे हैं कि हम लोग कि 99% अगर अल्कोहल कंटेंट दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हम लोग को और भी कुछ कुछ नहीं यहाँ वही बट हम लोग डॉक्टर नहीं है ना, वही करना चाहता हूँ। हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग इंजीनियर की टेक्निक से सोचेंगे। वो चीज यहाँ पे है तो मार्केट में वो सैनिटाइजर आ रहा है, सैनिटाइजर आ रहा है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि लोगों का रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या है, प्रोडक्टिविटी कैसे है, और हम ट्रांसपोर्ट के लिए कहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। बट आई वांट टू ऐड वन पॉइंट। अच्छा, अब आप सबको प्लीज मौका दीजिए बोलने का। अच्छा सचिन जी बोलिए, सचिन जी बोलिए, बना रहे हैं सचिन जी आप बोलिए, मुझे ये लगता है, आप एक सेकंड समझ लो, वो हमें पता होना चाहिए और हर प्रोडक्ट के ऊपर उसका हार्मफुल इफेक्ट मेंशन करना चाहिए कि हाँ इसको लगाने से इसके ऊपर ये हार्मफुल इफेक्ट, इसको इस स्पेसिफिक ग्रुप पे ये हार्मफुल इफेक्ट ये चीज हो रहा है ना। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, सचिन ने सही पॉइंट बोला, इस ग्रुप के लोगों पे सचिन से वेरी गुड पॉइंट, बट आई वांट टू ऐड वन पॉइंट। मेंशन करना चाहिए साथ ही साथ। या गुड विदाउट टेस्टिंग, अगर इसको टेस्ट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, उसको मल्टीपल नहीं लाना चाहिए। अगर इतना टाइम है कि स्मॉल सचिन बट हम लोग इंजीनियर हैं यार, उसको हम लोग ला सकते हैं। या गुड बट आई डू वन पॉइंट, आई वांट, मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। हैप्पी एक सेकंड, मुझे एक पॉइंट ऐड करना है कि हम लोग इंजीनियर हैं, इंजीनियर की तरीका से सोचे, हम लोग एक कोशिश करेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट में अजीत जी लिसन, हम लोग इंजीनियर हैं, कंपनी को प्रॉफिट में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी देखेंगे कि कहां-कहां विलेज में ट्रांसपोर्ट के साथ हम पोस्ट में भी देखेंगे कि पोस्ट में जाएगी, कंपनी हर किसी के पास करेंगे। हम सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट में नहीं जा सकते, कंपनी इस बेसिस पे नहीं चलती कि इसमें प्रॉफिट कितना प्रॉफिट कोई कर रहा है, बट यू आर पहले से रिटर्न पर काम देन यू कैन एश्योर वो क्या हो रहा है ना। हम लोग मिनिमम लॉस देखिए आपकी बात ठीक है अजीत, आप इंजीनियर हो ओके, बट वहाँ पे हम कहते हैं मैनेजर सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ऐड मैनेजर सोचना है। अरे सुनिए तो पूरी बात, बोले हम वहाँ पे बोले हम वहाँ पे ब्रांडिंग पे भी खेल सकते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट 2-3 नॉर्म्स है उनको हम टेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट को बताते हैं और लाइक वी आर यूजिंग द आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, राइट। ठीक है, अभी लिसन कोविड के टाइम पे इंसान वैसे बहुत डरा हुआ है, ठीक है, अगर उसको पता है इतने सारे रूमर्स फैल रहे हैं, रूमर्स नहीं बोल सकते हैं कि आप हल्दी का दूध पीजिए, आप ये करिए, ठीक है, आप प्याज खाइए। लिसन मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर मैं मैनेजमेंट के लिए सोचूंगा कि मैं उस पॉइंट पे अगर मुझे ये सोचना होगा कि इम्प्रूवमेंट करना होगा, जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है उसको इम्प्रूव करना होगा, उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, उसको ड्यूरेशन होना चाहिए। माइक जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि जैसे अगर हम, जैसे आज के टाइम पे इंसान कोविड में बहुत इंसान डरा हुआ है, ठीक है, तो हम पहले खेलेंगे ब्रांडिंग पे अपने, ठीक है, कि देखिए कि हमारा प्रोडक्ट हर्बल है, इससे आपको कुछ नहीं होगा, तो हमारी आधी पॉपुलेशन तो वैसे ही हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लेगी। और एक टाइम पे हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो गया ना, तो हम अपनी टेस्टिंग डिपार्टमेंट को हम बढ़ा सकते हैं, उनको हम फंडिंग ज्यादा दे सकते हैं, जिससे हमारी टेस्टिंग फटाफट हो खाली जाएगी। हर्बल का हम लोग कन्फाइंड अगर बिना टेस्टिंग उसको मार्केट में ले आए मार्केट लाने के बाद नहीं कर रहा हूँ, कंपनी का मैं ये कह रहा हूँ
अगर वो हार्मफुल हो गया तो लोग बीमार हमारा अगर फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, फीडबैक के साथ उसको इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि कहाँ इम्प्रूव होना है, क्या मार्केट नहीं लाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूरा नॉर्म्स वायलेट करने के लिए नहीं कह रहा गुड पॉइंट। मैं ये कह रहा हूँ आपके जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर हम लोग नॉर्म्स देखिए, हम लोग अगर नॉर्म्स वायलेट कर रहे हैं तो इसके साथ हम लोग को मेक श्योर ये करना है कि अगर हम लोग सैनिटाइजर जैसे आप बोले ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं, साथ ही हम लोग को अवेयरनेस भी एक फैलाना पड़ेगा कि इस चीज का अगर ये कुछ, जैसे अब देखिए हम लोग अगर कुछ वायलेट नॉर्म्स को वायलेट किए हो तो हमको पता ही है कंपनी को, हम लोग 2-3 चीजों पे कुछ किए हैं, गड़बड़ तो किए, कुछ नॉर्म्स है जो अभी के लिए हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे। अमर को आप पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। बीमारी हो, उस पर कोई हार्मफुल इफेक्ट हो रहा हो तो उसको पता है कि हमें इसे यूज नहीं करना है। सचिन सही बोल रहा है। अगर मार्केट में आ गया है तो मार्केट में हमें ये भी देखना पड़ेगा उसका फीडबैक बहुत रिक्वायरमेंट है। फीडबैक के साथ साथ हर जगह पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करना चाहिए। एक पॉइंट तब से ऐड करना चाह रहा हूँ कि अवेयरनेस, अगर हम लोग कोई नॉर्म्स को, जैसे हम लोग को पता है ऑलरेडी कि हम लोग छोटे मोटे कुछ नॉर्म्स को थोड़ा बहुत वायलेट कर रहे हैं, मे बी उसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे जो हम लोग को टेस्टिंग में पता चल रहे होंगे, तो उसको साइड इफेक्ट को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इनडायरेक्टली अवेयरनेस के थ्रू, जैसे कि हम लोग बेच रहे हैं उसके साथ साथ अवेयर भी कर लेंगे। हाँ, जैसे कि एक जैसे पर्टिकुलर एग्जाम, कुछ मेडिसिन होते हैं उनको बोलते हैं कि हीट में ज्यादा मत रखिए, उनको थोड़ा वार्म जगह पर नहीं रखना चाहिए, कोल्ड जगह पर रखिए, कोल्ड स्पेस पे रखिए। तो I think now we need to conclude. Amar, you are an entrepreneur. Now let's conclude. Yes sir, I want to conclude. So one by one. Amar, you start concluding. Everybody is going to conclude. Yes sir. So on the basis of what you people discussed, I give you 1.5 minute maximum to conclude the entire discussion. Yes. Amar, go ahead. Yes sir. So basically, we have a very fruitful and very good discussion, and there are lots of points. 3-4 major, out of them 3 or 4 major points are there which I want to highlight there. So first of all, we start our discussion with the company norms कि पहले कंपनी में हम लोग, जैसे कि अभी लॉस में पूरा चल रहा है, तो हम लोग का मेन कंसर्न एज ए मैनेजर, हम लोग का मेन कंसर्न ये है कि अभी जब क्रिटिकलिटी आ गई है कि इस चीज को अभी यूज करना है, अभी कुछ कहीं एक अपने को वैसे डायरेक्शन बना के कुछ निकालना है, उसमें से कुछ प्रोडक्शन हम लोग को शुरू करना है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग कुछ कुछ नॉर्म्स को थोड़ा बहुत वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर 100% नॉर्म्स को लेके अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वो फिर ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, मे बी जो प्रॉफिट कमाना, जहां हम लोग पैसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन अर्न कर सकते थे, उतना हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। तो सर पहला चीज है कि सर क्रिटिकलिटी, कि हम लोग को पहले वो चेक करना पड़ेगा, अगर हम लोग कोई नॉर्म्स को अगर वायलेट किए हुए हैं, जैसे हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग छोटे मोटे कुछ नॉर्म्स को, माइनर चीजों को वायलेट कर रहे हैं, तो उसका क्रिटिकलिटी क्या है कि वो मतलब कुछ ज्यादा एडवर्स इफेक्ट कर रहा है, कि अगर जैसे कोई यूज कर रहा है हमारे हैंड सैनिटाइजर्स को, शायद उसको कुछ मतलब स्किन पे कुछ दिक्कत ना आ जाए, या कुछ फर्दर और कुछ उल्टा ना हो जाए चीजें, वो चीज पे हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्रिटिकलिटी पे चेक करना चाहिए। फिर दूसरा है सर कि अवेयरनेस पे, अगर हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हम लोग नॉर्म्स को, कुछ छोटे मोटे चीजों को हम लोग वायलेट कर लिए, तो मे बी उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जो हम लोग को बाय टेस्ट मेडिकल से, कैसे भी हम लोग जो फार्मा कंपनी, हम लोग को वहां से पता चल रहा है कि ये छोटे मोटे कुछ साइड इफेक्ट मे बी किसी स्किन में या किसी चीजों में लोगों पे हो सकता है। तो उस चीज की वजह से थोड़ा बहुत अवेयरनेस भी हम लोग साथ ही साथ करेंगे कि इसके साथ, इसके जैसे कि ये कोई प्रोडक्ट है, इसको हम लोग इसमें नहीं कर सकते, इसका 2-3 जैसे कि हम लोग एक अवेयरनेस की तरह एक बना सकते हैं चीजों को लेकर। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है सर कि प्रोडक्शन, जो हम लोग मेन कंसर्न हम लोग का पहले शुरुआत में था कि प्रोडक्शन हम लोग को रोकना नहीं चाहिए, कि इट शुड नॉट अफेक्ट आवर प्रोडक्शन, तो उस चीज को भी उस चीज ध्यान देना चाहिए। और चौथा पॉइंट, एक हमारे कॉलीग ने एक अच्छा पॉइंट बोला था कि जो हम लोग अगर, जैसे कि हम लोग सप्लाई भी कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करके हम लोग जो सप्लाई कर रहे हैं, वो सप्लाई पे भी हमको ध्यान देना चाहिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सेसिबल हो पाए हर कोई, जैसे कि रिमोट एरियाज तक भी हम लोग का प्रोडक्ट जाके पहुंच पाए, वहां से भी। और जितने ज्यादा इंस्टेंटली शुरुआत में जितने प्रोडक्ट हम लोग सेल करते जाएंगे, जितने लोगों के पास पहुंचेगा, उससे उतना ज्यादा हम लोग को फीडबैक मिल पाएगा अपने प्रोडक्ट को, तो उसमें हम लोग बहुत कम टाइम में इंप्रूव कर सकते हैं चीजों को लेकर, और क्या क्या हम लोग बहुत कम टाइम में इंप्रूव कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा फीडबैक मिलेगा, मतलब ज्यादा हम लोग को पहुंचाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर दूर रिमोट एरिया तक भी पहुंचाना पड़ेगा। सो दिस आर 3-4 पॉइंट व्हिच आई वांट टू कंक्लूड दिस। ओके, अजीत। यस सर।
सर माय कंक्लूजन मुझे ये लगता है कि अगर फार्मा कंपनी पहले 2 साल निगेटिव में अगर जा रहा है तो मुझे पॉजिटिव भी सोचना है और कोविड में लोगों को हेल्प भी सोचना है। तो मुझे इसके लिए 3-4 मेंबरशिप बनाना चाहिए सर। मुझे एक पहला मेंबर ये लगता है कि हमें ट्रांसपोर्ट के लिए एक मैंने विलेज साइड और जहां जरूरत है रिक्वायरमेंट है उस जगह पे पहुंचना चाहिए सैनिटाइजर। सेकंड पॉइंट ये लगता है सर कि उसका फीडबैक के लिए एक टीम बनाना चाहिए जो फीडबैक हर जगह देखकर एक एक देखकर आए कि बताए कि उसका फीडबैक या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है या क्या इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। थर्ड ये होना चाहिए सर कि अगर बोर्ड में कहीं हमारा मेडिसिन कहीं चेक के लिए गया है कि कोई बोर्ड में गया कि इसका मैंने रिसर्च किया जा रहा है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो वहां भी हमें पॉइंट एक मेंबर को देखना चाहिए कि उस मेंबर को ये देखना चाहिए कि हमारे में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जो हम उसी में चेंज कर कर हम लोगों को मैंने और बेहतर और पॉजिटिविटी और या इम्प्रूव करके दे। चौथी टीम ये लगता है सर कि ऑल ओवर कंपनी के मैंने प्रोडक्टिविटी पे देखना चाहिए कि प्रोडक्ट हम कैसे इंक्रीज करें और मार्केट में इजिली अवेलेबल कैसे हो। और 5th पॉइंट मुझे ये लगता है सर कि टाइम ड्यूरेशन हर चीज करना चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन अगर लोगों को पहुंच रहा है तो लोग और फीडबैक अगर पॉजिटिव है तो लोग हमारे पास इजिली ये चीज लेने के या खरीदने के लिए। और सर और कोविड होने के कारण ऑनलाइन सुविधा होना चाहिए हर चीज, जिसके कारण कंपनी का रिक्वायरमेंट और मैनेजमेंट को एक क्लियरली करना चाहिए कि ऑनलाइन सुविधा है और इजिली मैंने उसके पास पहुंचना चाहिए। थैंक यू। Okay. Now I go to Happy. सर मेरे हिसाब से सर कि प्रोडक्ट हम बेचेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑनलाइन ऐप लॉन्च कर देंगे अपने फार्मा कंपनी से कि आप मेरे मेरे प्रोडक्ट यूज करके अगर कुछ कमी पत लग रही है तो आप मेरे उस पर रिव्यू दीजिए मेरे ऑनलाइन प्रोडक्ट, ताकि ऑनलाइन से क्या होगा डायरेक्ट वो मेरी कंपनी को तुरंत हम उस पर सुधार करेंगे और मुझे प्रोडक्ट धीरे धीरे बनाते रहना चाहिए। हम बना रहे प्रोडक्ट क्योंकि हम पहले से चेक किए ही होंगे कि इसका जो हार्म है जो ये किसी इंसान को बहुत कम हार्म कर रहा हो, तभी हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। उसे जब हम प्रोडक्ट बनाना शुरू किए होंगे या सैनिटाइजर, उससे पहले उसको हम चेक कर चुके होंगे कि क्या ये कितना किसी भी ह्यूमन पे हार्म कर रहा है। अगर हमको लगा कि इसका हार्म नहीं कर रहा है, अगर थोड़ा सा नॉर्म हम फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, अगर इंसान पे हार्म नहीं कर रहा है, तो हमको उसको प्रोडक्ट को बनाते रहना चाहिए ताकि कंपनी जो मेरा प्रॉफिट में चलती रहनी चाहिए। लोग कोविड की वजह से क्या हुआ कि बहुत चीज हर जगह पहुंच नहीं सकते, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जहां से हम अपने सैनिटाइजर को दूसरे अदर अदर एरियाज में सेंड कर सकें। Okay. Okay, I think then we can go for Sachin. तो सिंस हम जो प्रोडक्ट जो हम अभी बना नहीं पाए हैं, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, उसको हम टेस्टिंग भी नहीं कर पाए हैं, तो इनिशियली हम क्या कर सकते हैं कि कहीं से आउटसोर्स कर सकते हैं जो सैनिटाइजर है, अभी जो क्या इमरजेंसी है, तो उस चीज को हम कैटर करने के लिए आउटसोर्स कर सकते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और अगर स्मॉल टाइम में हमारे पास टाइम है तो हम उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं स्मॉल ग्रुप में और उसके साइड इफेक्ट अगर देख सकते हैं और उसको हम मेंशन कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे और अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी कि हाँ इससे ये दिक्कत है, उसको हम लोग और फिर हाईलाइटर उसके हम लोग कैटर कर सकते हैं, समय के साथ उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं कर सकते कि हमारे पास उसका टेस्टिंग नहीं किया हुआ है और उसको डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च कर दें। अब उससे हार्मफुल क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा कुछ बीमारी पड़ जाए, लोगों को हार्मफुल हो जाए, तो कंपनी की रेपुटेशन लॉन्ग टर्म में बहुत खराब हो जाएगा। तो हम विदाउट टेस्टिंग उसको कर नहीं सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि उसको इनिशियली आउटसोर्स करना चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इमरजेंसी में। और जो कम समय है इसमें टेस्टिंग करने के बाद, उसके बाद हमें अगर उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। Okay, now Mayank. सर जैसे हमारा सॉल्यूशन हमको ये निकालना है कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में रहे और मेरी ह्यूमैनिटी भी बच रहे। तो सर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं उनको पहले हम क्रिटिकली डिवाइड कर सकते हैं और जो 2-3 नॉर्म्स उनको पहले फॉलो करते हैं। और हम जो है हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, उस पर हम खेल सकते हैं ब्रांडिंग पे, क्योंकि कोविड में इंसान वैसे डरा हुआ बहुत ज़्यादा है, तो एक बार उसको ट्रस्ट हो गया हमारे प्रोडक्ट पे और अल्टीमेटली हम हर्बल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियस, और हम स्किन पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस बात है, इतना कुछ हार्म नहीं होगा, है ना। तो सर इस पे पहले हम एक अपना क्या कहते हैं ब्रांडिंग के ऊपर हम अपने ट्रस्ट बना लेंगे। फिर जैसे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना, तो हम अपने टेस्टिंग डिपार्टमेंट को बढ़ा देंगे, और जैसे उस टेस्टिंग डिपार्टमेंट को बढ़ाएंगे तो हमारा फंडिंग ज़्यादा देंगे, तो हमें जितने भी नॉर्म्स हैं हम फटाफट उनको हम एक बार क्लेरिफाई कर लेंगे, और जो भी हमारे नॉर्म्स फुलफिल होने से हम उनको फुलफिल कर सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको हम फुल्ली लॉन्च कर सकते हैं बेसिकली। और सर जैसे एग्जाम्पल में देखो, मैगी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मैगी में इनिशियली आई थी लेड की दिक्कत आई थी, बट वहाँ पे उन्होंने ब्रांडिंग पे इतना अच्छा खेला था कि लोगों को मैगी पे ट्रस्ट था, उनको पता था कि उनका टेस्टिंग इतनी अच्छी होगी कि बाद में वो मेरे लिए सेफ, अल्टीमेटली सेफ ही आएगी। तो हम ऐसा अगर खेलेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। और सर जैसे मैंने मेंशन किया कि मेरा स्किन प्रोडक्ट है, तो इसमें कुछ इतना हार्म नहीं होगा, और मैं यूज़ कर रहा हूँ हर्बल प्रोडक्ट,
तो अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी को भी हार्म नहीं होगा। थैंक यू, दैट्स द सॉल्यूशन फॉर बोथ ह्यूमैनिटी एज वेल एज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। Okay, now I think we can go for Siddhant. Yes, sir. I feel that unethical practices should not be adopted initially, because in long run it would hamper your company. So what we can do is, since it is not a complex medical product, so we can follow predefined norms and start our production, and put people behind the authorities to get the norms and certification as soon as possible. And also we can take the example of Serum Institute, that even before vaccines came into the market, they invested money on with Oxford Institute and Oxford University, and finally the Covishield came into the market. They were so confident with their R&D, they took risk. And also the thing was, they partnered with the government. So easy certification, easy and faster certifications could be granted to them. The same we can do here as well. We can take a similar example and follow. What we can do is, we can directly come with the government. We can talk to the government that, yeah, I'm producing cost effective sanitizers, and so there can be a pull from their side also, so we can get the certification much faster, as if we approach the authorities as an individual. So I feel that we should approach the government bodies also, that I'll be providing the sanitizer at better prices, and side by side the production should start. It should not come to the. Okay, now I think Kiran can start. Yes, sir. First of all, we have been given a case study about sanitizers, sir, about a pharmaceutical company that producing sanitizers. So sanitizer is such a product that it's not limited only to the COVID, COVID time. It's also previously, and also for the future. In future also, there is a demand for that. So accordingly, the most important thing is, we should not take bad name for our company. So first we will launch our product locally. According to the feedback, then we can go to the much higher launch, we can sell through Amazon sales and all. And if we are our product is not affecting some of the skin types, like dry skin or something, for some of the skin types it may not be suited. So we need to clearly mention it on the product, sir. Otherwise our reputation will be going down. And also, sir, yeah, and also, yes, sir, those are my points. We need to advertise our product very carefully. We need to clearly mention about what are the skin types it will affect, some of the skin rashes or skin diseases like that, or else our reputation will go down. As the demand of the product is estimated to near future also, we need to be careful about the reputation, sir. Okay. Now Deep Chakrabarti. Sir, we have to think both aspects, like the profit and the quality of the product. So first of all, we should not stop the manufacturing, and we have to sell the product as much as possible. If we reach to a vast number of people, then we will get a lot of opinion, and we have to collect a lot of feedback from various people. It will help the company to upgrade the product, and we have to initiate the testing process at the same time, and we have to increase the quality of the product more, and we have to look the advertisement process also. Like, we can't say that this is the best product, it can kill 100% chance. Like, we can't do advertise in this way. Certainly. Okay, so anybody left? Okay, so anybody left? No, sir. Okay, so let me give you the feedback first about you. Just give me a second. Okay, so let me give you the feedback first for you, whatever you said. So I was jotting down what you people are saying. Number one, if you don't talk in the discussion, you are out. वो एक चीज का ख्याल रखना कि मुंह तो खोलना है तुम्हें. You need to open your mouth and you need to speak, and not only speaking matters, gesture, posture, nodding, activity, everything is observed. You need to sit very actively. You need to move your hands. You need to listen to other. At least you should appear to be listening to others. You need to nod and you need to actively participate, because SailMate is going to be 1.5 hours. It is 1.5 hours is a marathon session.
तो 3 वेरिएंट्स हैं इसके, and these guys take it very seriously. So you need to maintain that energy level in you and simultaneously talk to them, listen to others, and attentively listen to others and give your point. So that is the first mantra. If you don't talk, you are out of it. So some of you were not talking, though I'll not give you that particular feedback, like you need to speak. Happy, like you were silent for many long duration, you need not to be silent for that, you need to participate. I mean, you need to speak. Deep was also silent for long, and Sachin also spoke, but not that much. Mank also. So you need to talk, like Amar was talking, Ajit was talking, so couple of you, Kiran was talking, couple of you were talking, some of you were not talking. So for them it is very easy to X you out, right? I mean 3-4 लोगों को निकाल देगा तो कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है if you don't speak. Now Amar talked about very important point, which was criticality. कि देखते तो है नुकसान कितना है, कि ठीक है हमने नॉर्म्स नहीं लिया, तो नॉर्म्स तो लोग जो चाय बनाते हैं वो भी नहीं लेते हैं. पॉइंट वो है कि जो चाय बना रहा है बाहर, पर्सन हु इज मेकिंग टी, इवन ही इज नॉट टॉकिंग द नॉर्म्स, ही इज मेकिंग टी, समथिंग लाइक दैट. हैंड सैनिटाइजर है, तो व्हाट काइंड ऑफ नॉर्म्स, वी विल सी दैट. ही सेड criticality, how dangerous it is going to be. Have you done self assessment? Regulatory board will be doing something else, but have you done self assessment of your product? What is your self assessment? We are talking about that I have made a movie, censor board may not pass it, but what is your view on your movie? Do you think it is worth showing to the public? You have made a product, what do you think? Because every pharma company has its own parameters, right? So on your parameter, where do you stand? What is your take on that? So aapka self assessment, what happens is, sometimes when you think you are correct, you are right, you take a decision. Maybe somebody says no, you take a decision. There are two issues here involved, and in the life of manager all these issues pop up. One, things which is not as per the law, you are violating law. And second, unethical, inhuman thing, right? So when you don't put on the helmet, it is you are violating the law. You are not killing anybody, you are not doing unethical work, you are breaking the law. That is a different thing. But killing somebody, hurting somebody is unethical. That means you are making a thing and you are aware that it may lead to the trouble to the people. That is unethical, that is inhuman. It should not be unethical, it is illegal. Unethical, these two are different things. And in any decision making, we professionals always get actually trapped into these issues. Illegal hai ya unethical hai, these two are different things. Illegal है तो किस लेवल तक illegal है? I told you, like not putting helmet is also illegal. You can't, you are breaking the law. So but sometime in urgency, when you are to move and you are not having helmet or something, you have to move, you move that that you are breaking the law, but then at the same time you are aware that you are safe, you are something like that. That is how you do it. Then Ajit talked about people response and feedback. Ajit, you were deviating also from the topic, because here we are not talking about the customer as of now. We are not saying that how good we have to provide the product to customer. No, marketing, sale, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे वो बात नहीं हो रहा है. कस्टमर तो खुश हो जाएगा, तुम उसको ऐप के थ्रू बेचना स्टार्ट कर दोगे. यू आर सेलिंग ऑन ऐप, कस्टमर वांट्स 5 पीस, you said him 5 piece, person is in the remote place and your service is being provided to him in the remote place. That is not the topic actually. Topic is about, do you want to sell, you want to produce or not? That is the question. How you want to sell, how good your service should be, it is not the question. So that I found little deviation, Ajit, in your conclusion. Same Happy ke case mein, he was talking about online app you want to launch and make the service very good. No, that was not the question actually. Question here was, do you want to go? If yes, why? If not, why? How do you solve this riddle? How do you bring your company out of it? Second stage is like, how good you have to sell it. Are you facing trouble? The product is very good, but productivity is not coming. So how to sell it? That is a separate question. That is a separate question altogether. That is also important case study. कि product है तुम्हारे पास, बेचेंगे कैसे उसको? That is the second question. Sachin said, okay, we will outsource till testing. That was having some point actually. कि जो चीज हमारे पास नहीं है. Suppose we made a product, but we are not having some kind of regulatory, permission for something. So can we outsource some part of that? Is it possible? I mean, why don't we think over that? कि we outsource to some company which has some kind of permission. Okay, भाई ये तुम हमें दे दो और आगे हम अपना product भेज देते हैं. But that is one of the thinking. He started thinking in that direction. Then you go for testing. In the same time you start developing your testing
facilities and you take the permission or something like that can be done. So outsourcing can be a word. Mayank talked about profit, and then profit said testing can be done, funding will come, and then norms can also be satisfied. So Mayank suggested some means, but Mayank, the trouble here is like, question was this only: will you sell at the first place? So you said, okay, we'll sell. The profit will come. Profit say testing will come. So actually, the very first question is, would you sell or not? So profit will only come if you sell, and the question was that where you will sell or not. Siddhant said, okay, let's talk to government for certification. Government has already established the regulatory norms, regulatory board. So it is not that for movies, censor board is not passing, I'll go to the government. No, government will say, go to the censor board. That is a body we have created. So regulatory body government nahi banaya hai. Again, you cannot go to the government. So it is not no point going to the government for this. So that was little decision, which was not practically very effective decision. Kiran mentioned clearly. Mentioned clearly about on the product that my product has this issue. But the Kiran, if you do that, regulatory board will catch you. Actually, your product will not be in the market. Actually, so if you mention everything that okay, we are putting this or this particular. No, sir. Like a product can be suited for not particularly suited for some kind of skin types. That I want to mention clearly, sir. Okay, so you are saying that okay, we divide the product into categories. So yes, one particular product can be for this thing, another category or this thing. So yes, what kind of harm can it be there? We clear what kind of harms it can have. Something like that you are saying. Then the reputation of the company will not go down. Obviously, so those things are normally mentioned, Kiran. You don't hide those things. Even if you take a cigarette के ऊपर लिखा होता है injurious to health, right? So that is something like that you are saying, you will mention, right? But the point is like you need to see what your competitors are writing. If they are not writing like that, but you are writing like that, why your product will be sold? That is my point is, right? Because ultimately it affects the reputation of the company, sir. Since the demand will be for a long time, our product. The point is, if you tell honestly, you will not be sold. If you don't tell honestly, you will be sold. So obviously that was a riddle. If you want to maintain reputation also of the company, regulatory norms also you want to follow, sale also you want to increase, then there is no riddle actually. Case study is always that अब एक trouble आ गया है organization के अंदर, there is a trouble, there is an issue. You guys are to resolve that issue. So if you put assumptions that there is no issue, there is no trouble, that assumption we cannot make. We need to move with that assumption. We need to move with the fact that okay, there is an issue. Now what to do? Some degree of unethical stuff, unprofessional stuff, should we do or not? Case studies are largely related to that. Whether this manager, like, if we don't cut the trees, we cannot expand. But we need to expand because productivity we need to increase. So if we cut the trees, we will plant the trees somewhere else. But if we ask the permission of National Green Tribunal or Pollution Control Board, they will not give us permission. So what manager do you suggest? As a manager, what do you suggest? Should we proceed ahead or should we ask for that? So that is the point. This is what actually is the riddle for manager. It's not always right easy. So Deep sell, okay, sell as much as possible. So we need to have profitability. So we need to sell. So Deep said that, but how you can do that? Still you are not answered the riddle. That is the point. देखो सेल तो हमें करना है भाई, हमें सेल के बिना तो मर जाएंगे. See, I tell you in case studies, there are certain things which you have to do. Thumb rule I give you: profitability, growth of the company, survival of the company is main important thing. That is the main important thing. You are to do that. Now, how you want to do that? That is the question. So your solution can always start with, yes, we want to increase the productivity. We want to, save our company. We want to come out of the trouble. Now, how you want to do that? This is the solution. Never ever assume that we will not do the productivity, because we cannot be unethical. We cannot put the life of the people at risk. Are you going to put the life of the people at risk? Maybe that is your assumption. In the case study, it is not mentioned. Let me take you back to the case study now. I'm taking you back to the case study and read it carefully. So when the page is given to you there, read that page carefully. You need to read that page very, very cautiously, because maybe whatever you are assuming that not be there. There are two partners, A and B, pharma company running in losses. Okay, COVID आ गया. अभी कोविड आ गया भाई साहब. कोविड पे किसी ने फोकस नहीं किया. Anyone of you focused on COVID? And why COVID was important? Because COVID was important because that was something new,
And if something new, regulatory norms cannot be put overnight on you. You need to think that. So COVID के आने से suddenly requirement बढ़ी, and not only you are taking care of the profit of your company, you are taking care of the people also, because urgently it is required. So many times regulatory norms which were earlier there, during urgency time, new regulatory norms pop up. That particular thing was to be there in your mind. So COVID situation, focus on each and every point. This is a COVID situation, sir. It is not the normal situation. COVID situation, something is better than nothing. So here you give me a sanitizer which can save people, and maybe regulatory norms were not existing earlier like that. So it is like this. Would you like to educate your kids by laptop or no education? Best education for a child of 3 years, 4 years, 5 years is offline. School are closed for 2 years. Do you want to give them laptop and risk their eyes and educate them, or don't you want to do that? So COVID nobody expected. Now it has come. You need to do something. So something is better than nothing. I assume that offline education is not being imparted. So online cannot replace offline. But still, something is better than nothing. That is what I'm telling. That point I'm trying to focus here. You should have seen that. So for you, it is a big opportunity. But think of the other side of the coin. Think of other side. हाँ. सर मैंने पॉइंट रखा था, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो भाई तुमने कंक्लूजन में तो नहीं बोला अजीत? कंक्लूजन में नहीं, स्टार्टिंग में बोला था सर. हाँ, तो तुम्हें वो चीज ये भी देखना, तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है. देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी टू सर्व द पीपल ऑल्सो. थिंक ऑफ दैट ऑलवेज. You are earning profit, but are you not serving people also? That is also the question. That is also the point. So company can make hand sanitizer. Company can make hand sanitizer, and company should make. सर बहुत लोग बार बार रेपुटेशन वाला पॉइंट रख रहा था. अगर कंपनी का रेपुटेशन इतना ही अच्छा था तो 2 साल कंटिन्यू नेगेटिव में क्यों गया? नहीं भाई, रेपुटेशन से सेल या उसका रिलेशन नहीं है. आपको पता है ये जो ऐसे बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसे बहुत से अच्छे टीचर हैं जिनका कोचिंग चलता ही नहीं है, और ऐसे बहुत सी इंस्टीट्यूट में फॉरेन फंडिंग लाके बेकार पढ़ा रही हैं लेकिन बिजनेस चला रही हैं. क्या करना है उसमें? अंडरस्टैंड दैट. सो सेल इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑलवेज, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. नो, even if you have very good quality of product with you, customer is satisfied, but after some time your shop will close, दुकान बंद हो जाएगा, because marketing नहीं कर पाए तुम. So that is a different domain altogether. Product is good and sale बढ़ जाएगा. इससे आसान तो लाइफ में कुछ है ही नहीं. आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया और सेल बढ़ गया. IITs के there are so many professors. I keep on going to the campuses in IIT. These guys have made so good product, but they can't sell. प्रोडक्ट है लेकिन सेल नहीं हो रहा है. अजीत तुम तो IIT बॉम्बे में हो, तुम जानते हो इस चीज को. इट इज नॉट दैट इजी टू सेल द थिंग्स, राइट? सो दिस इज द पॉइंट एक्चुअली. ओके, सो issue is that testing of the sanitizer has not been done. But where you got time to test that sanitizer? It is a COVID situation. Now why can't you creatively think? COVID लग गया, लॉकडाउन लग गया, तो टेस्टिंग भी तो डिले होगा भाई. अब मेरे को सैनिटाइजर कल चाहिए, टेस्टिंग कब करेंगे हम? आपको इस डायरेक्शन में, यू पीपल शुड हैव टेकन दिस डिस्कशन इन दैट डायरेक्शन कि सर कोविड लॉकडाउन सडनली लगा एंड नाउ एवरीथिंग इज क्लोज्ड. आई मीन टेस्टिंग फैसिलिटीज मे आल्सो बी क्लोज्ड, बट if we can roll out the sanitizer, we should do that. He is only checking your approach. He is only checking what you can read between the lines. Can you read something between the lines? That is what he is checking. Rohit believes that reputation of the company. Now he has given you some trap words, and you guys get trapped into that. The reputation of the company can be at the stake. That Rohit believes. Why you people took it as a reality? Maybe one of the fellow will believing that. Rohit is believing that. Maybe Prakash is not believing. Why he gave you 2 characters in that? He gave you 2 characters because one fellow is thinking overcautious, another is thinking practically correct. Maybe regulations were violated, so chances of it are very less. So that means the minute chance. कोका कोला के अंदर भी तुम्हें पता है ना, वो एसिड्स पेस्टिसाइड्स होते हैं कोका कोला के अंदर. तुमने पीना बंद कर दिया क्या? अभी भी अजीत ने पार्टी दी है जॉब का, पिछले कुछ दिन पहले कोका कोला का पार्टी दिया अजीत ने. So you don't stop that actually, though that is there. So Prakash believes they are not doing anything unethical since it is the thing. So it may take months, but we need sanitizer now. So he has given you hints also. He has given you hints also what is to be done. So what I could think of the solution can be this. Like first, as Amar said, we need to do criticality. So how damaging is the violation of norms to the human health? That is first thing. So I'll say this is a self-assessment on the part of company.
So this is called a self-internal assessment by company of its own product. That is something which is very, very important. So self-internal assessment is to be done of your own product. Are you confident about your product? That is to be done. Then what about your competitors? Who are the other suppliers? What they are doing? How they are managing? Are they doing the testing? Because the problem is same for everyone. Can we initiate parallel process to seek approval? Okay, you roll out the product. At the same time, you seek the permission also. Start that process also. Urgency of the service, COVID. You're talking about COVID, So you are talking about the COVID situation. And, testing may not be there. Testing infeasible. It may be infeasible. How you do that? Then, can we roll out another product fulfilling regulatory norms? I mean, a company is there. It is not rolling out single product. It may roll out multiple products. Are you doing that? Outsource some activity for which we don't have regulatory permissions. Yeah. I mean, कुछ और कर दो जिसके regulatory permission आपको जैसे होता है outsource कर दो काम. You do that. That also good point I took from you. Keep improving the product. First roll out and then keep improving it. I tell you from YourPedia experience also, man. We launched NPTEL module. Last year we launched it on the YouTube. We did not give any booklet. We launched it on YouTube. This year we gave the booklet, questions only. Next year we are going to question and solution also, right? This is how it is going. Testing is also going. First time we gave free of cost so that there is no customer dissatisfaction. When you give something free, where there can be customer dissatisfaction? We gave hours and hours of classes of NPTEL just to know whether student will purchase this product of YourPedia or not if we roll out NPTEL module. Whether they will do that. And we discussed with so many professors of IIT. Do you want us to come out with the NPTEL module? Is it conflict of interest with you guys? Because I don't want to do that. We are very close to IITs. We are working with you. So they said, okay, that's a very good idea. If you come out with this will enhance the quality of education. Okay, done. Then we took the feedback of the student free of cost. Then we came out with the book this year. Only questions. And then solution, questions, all complete. And then video recording, everything. So this is how product is launched. You launch it in stages, steps. But if you're confident that this is required and this should be done, this should be launched. And as understand me, you can never launch the product in its perfection at the very first stage. Perfection comes with passage of time. But first you have to roll it out. That is what is important. You have to come out with something like that. Then, regulatory norms are also to be seen in the present context of COVID. That is what I was telling you. That it is a COVID situation. So you need to consider that also. And also let me tell you one thing. Whatever is mentioned in the case study, do not consider it as truth. When Rohit is saying something, Prakash is saying something, it may be their view. It is not a fact. Don't assume it to be fact. Start reading between the lines. Whatever is mentioned in the passage, it has a meaning. Do not avoid that. Whatever is written, it may be that like COVID situation, you should have seen. But there is very less chance. Those chances of it are very less. It has a meaning. Start thinking on those. Right? That's all from my side. So I'll send you this solution also. And thinking develop karna start karo, and the rest is okay. Sir, I have one question. Yeah. Sir, if I have decided to start the discussion, but someone else has started already, then how should I continue? Deep, number one, if you could not start, does not mean you will not pass. Number one. If you could not conclude, does not mean you cannot pass. Out of 10 students, one will start, one will conclude, 5 more will also get selected. So it is not related to that. If you get opportunity, it's very good. This comes with practice. That is what I say. It comes with practice. If you say, sir, if I jump in the water first time and I can't swim, then what? I'll say, you will not. You will fumble, So practice, with practice, you will be in position to, introduce, conclude, speak. This thing is purely on the basis of the practice. A teacher keeps on becoming good teacher, with practice. He's practicing and now he knows how to teach. That is how it goes. Communication is also like that. Debate is also like that. Discussion is also. So keep practicing, Deep.
सर सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है जब Similar पूरा question, chaos sir. बन जाता है वहां पे? Okay, If one I by one, please. initiate, if I One by one, initiate, please. Okay, Sachin, you go first. तो Sachin, वो please. जो सिचुएशन बन जाता है पूरा chaos बन जाता है वहां पे, तो सिचुएशन को कैसे कैटर करना है? क्या उसमें देखो, ऐसा तो हमें नेगेटिव मार्किंग मिल रहा है, सब बोल अगर रहा है तुम हम काम नहीं की बोल बात रहे। बोलोगे, अगर तुम काम की बात बोलोगे तो पीपल विल लिसन टू यू। एंड सेल का अगर तुम्हें बता दूं तो वहां सफिशिएंट टाइम देता है तुम्हें, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, सफिशिएंट टाइम देगा। लास्ट में कंक्लूजन का टाइम दिया ना उसने, हर किसी को टाइम चांस दे रहा है वो। सेल में वो तुम्हें पूरा टाइम देता है, बाकियों में आईओसीएल एचपीसीएल में शायद टाइम ना मिले, लेकिन सेल में देता है वो। इसीलिए तो 1.5 घंटे का है ना, 1.5 आवर्स का है, तो टाइम देता है तुम्हें। सर शुभम, यू बी देयर। हाँ, गुड, या गो अहेड। सर नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे हमको प्रॉफिटेबिलिटी और ह्यूमन का दोनों का देखना था, तो सर पहले हम क्या कंसीडर करें, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर ह्यूमन, या फिर दोनों को हम पैरेलल लेके चले? दोनों को पैरेलल लिया जाता है। कल की केस स्टडी मैंने भेजी है तुम्हें, इट हैज टू बी पैरेलल ओनली। ओके सर, एक चीज और था कि हम किसी शुभम, यू और बी हियर, शुभम बी हियर। सर हम किसी और प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने मैगी का एग्जांपल दिया था। हाँ, ले सकते हैं बिल्कुल, पर सही सही सटीक बैठना चाहिए। ओके ओके। देखिए, हैंड सैनिटाइजर और मैगी, मैगी जो है कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट है, हैंड सैनिटाइजर कंज्यूम करने वाला नहीं है। इनफैक्ट आप तो लोगों को प्रीच कर रहे हैं कि आपने हाथ को, मुंह को क्लोज नहीं लाना है। ओके। तो दोनों में डिफरेंस है काफी। सैनिटाइजर जो होता है उसको पी नहीं सकते हो आप, पियोगे तो वैसे मर जाओगे। वो होता है, स्पिरिट होती है वो। नहीं सर, मैंने ये लिया था ना एग्जांपल, जैसे इनिशियली तो मैगी ने क्या किया था, अपने पहले ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया था प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। फिर बीच में इशू आया था कि वो लेड का इशू आ रहा था उनका कुछ, पर लोगों के दिमाग में इतनी ज्यादा चढ़ चुकी थी मैगी, उनको पता था। नहीं तो उसको बोलने का तरीका ये है ना कि फर्स्ट रोल आउट द प्रोडक्ट, उसमें आपको परफेक्शन नहीं आ सकता। मैंने आपको बताया ना कि जो भी प्रोडक्ट, एज अ टीचर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो भी चीज हम करने लगे हैं, जो करने वाले होते हैं, आप मेरे से पूछोगे सर, व्हेन यू टॉट सम सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम, वर यू टीचिंग एज एफिशिएंटली एज यू आर टीचिंग आफ्टर 10 years? आई विल से नो, इट वाज नॉट लाइक दैट, माय नॉलेज वाज नॉट दैट गुड, बट आई वाज टीचिंग ऑब्वियसली। From where, somewhere you have to make the beginning, right? You know that you are not perfect in this, but you need to make a beginning. That is a strategy. So actually, when we are doing case studies, we are developing a knack, we are developing one approach to speak there, and that fellow, when he will listen to your approach, he will give you marks. He is not sitting there to get a solution. इन चीजों का कोई solution नहीं होता। जैसे I ask you question, the moment you get married, your wife is going to ask you this question: whom do you love more, your mother or me? And what answer will you give? Now foolish husband, he will say, no, I love my mother, and she will slap you. You understand that? So you cannot give answer to this question is irrelevant. You understand that? And you cannot explain to her in that way also, that see, you are your place, your mother is your place. She will say, get lost. So you need to give the answer, and that is what answer he is looking for. You need to speak certain things like these terms, no, criticality, outsourcing, testing, urgent situation. So why you as manager hota kya hai yaar? Manager is a bloody, you have to cheat somebody. That is how. So not that way, I mean, you have to tell something like that कि नहीं ऐसे ऐसे करते हैं हम, वो करते हैं। That is what managing is all about. So you need to speak in that term. तो वो प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो तुम्हें वो पता लगेगा। लेकिन प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें केस स्टडीज दे रहा हूं बहुत सी, प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस करो, करने की करो। यू आर वेरी क्लोज। और कंपटीशन बहुत कम है इस बार, क्योंकि लोग जा नहीं रहे हैं, तैयारी करके नहीं जा रहे हैं, जनता नहीं जा रही है। गेट का एग्जाम आ गया, और एग्जाम 3-4 एग्जाम्स चल रहे हैं ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी का आ गया, वो एसएससी का चल रहा है, वो गेट का चल रहा है। सो पीपल आर नॉट, इफ यू गॉट अ कॉल, कन्वर्ट इट, इट इज इजी टू कन्वर्ट, बट प्लीज डू प्रैक्टिस, डू लॉट ऑफ एचआर, डू लॉट ऑफ स्नैप्स, do a lot of these case studies and all, and that will help you to go forward, right? Chalo, I end it up here only. Every night